Hello everyone, welcome to Mind Maps. And in this video lecture, we are discussing Cram's rule. Okay, for certain additions to carbon oxygen double bond of aldehyde and ketone having a alpha carbon. Okay, so we have certain aldehydes and ketones, it is carbonyl group. Okay, and there should be an alpha carbon, right? So Cram's rule is useful to predict which diastereomer will predominate, right? So there can be two types of products which we will be discussing, right? So how do we decide which is the major product and which is the minor product? So Cram's rule tells us that, right? So as you can see on the screen, right, we have a reaction, right? This is whatever this projection is. Okay, what is this projection? Okay, Newman's projection. This is Newman's projection, right? And here Nu is not Newman, it is a nucleophile, right? So we have a nucleophile, okay? And if you see this structure, we have something like this. We have two carbon atoms that are joined by so and so, and then we have a carbonyl group and an R group. We have a small, medium, and large group. As you can see, the black portion is the front side, right? The terms in black or whatever the symbols in black is on the front side. And when we see जो हम सामने से देखते हैं मॉलिक्यूल को तो जो कार्बोनिल है वो हमें सामने से दिखाई देता है और आर ग्रुप जो इस कार्बन से अटैच्ड है यहाँ पे कार्बन है जो हमें दिख नहीं रहा है सामने और पीछे का जो सर्कल है येलो कलर का वो एक और कार्बन एटम है और उससे तीन ग्रुप्स जॉइंट हैं जिनको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है जो है स्मॉल मीडियम और लार्ज राइट सो ये पीछे की साइड स्मॉल मीडियम लार्ज अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो दो जगह से आ सकता है या तो स्मॉल से आए या मीडियम से आए राइट हमें क्रांच रूल में हमें क्या करना होता है इस तरह से प्रोजेक्शन को लिखना होता है जिससे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मीडियम और स्मॉल साइज के बीच में फ्लैंक्ड हो मतलब स्मॉल और मीडियम जो ग्रुप है उनके बीच में सामने से हमें कार्बोनिल दिखना चाहिए जैसे आप देख रहे हो और जो लार्ज ग्रुप है दैट विल बी अवे स्टैगर्ड पोजीशन में होगा कार्बोनिल से क्यों क्योंकि लार्ज ग्रुप की वजह से क्या होता है रिपल्शन तो हमें एक pathway ढूंढनी है we have to find a certain pathway which is more stable whether it is from the small side or whether it is from the medium group, right? So we have a attack of a nucleophile, right? It is from the small side, right? This is the small group, right? So from the small group, we have an attack of a nucleophile. And what happens when you have an attack of a nucleophile? This nucleophile is on the same side as that of the small group on the back side पीछे के जो back side है उसी के सामने है एकदम right and the carbonyl okay the double bond is broken and we have a O minus which is in eclipse with the medium group okay and this is the eclipse conformation right but we know that eclipse conformation is not stable so what can be done right so what I'll do is I'll rotate the molecule by 60 degree okay by 60 degree and what will happen we have a staggered conformation again right we rotate the molecule the front carbon by 60 degree right in the anti-clockwise direction and we have a nucleophile O minus and R okay this can later on be uh, substituted by not substituted exactly but H minus will H plus will combine and this will be a OH group right so this is what it is right I hope you understood. So what happens when the nucleophile is attacking from the small side? Okay, it has an eclipsing position with the small group and then we do a rotation so that we have the stable conformation finally. Now let us see the second option. Okay, what happens in the second option? Right now we'll do an attack from the medium size. Okay, from the medium size group. What are N, L and S? N, L और S क्या है जो कार्बन से कोई तीन ग्रुप अटैच्ड है
वो सबसे बड़ा जो होगा वो लार्ज होगा, जो सबसे छोटा होगा वो स्मॉल होगा, और जो मीडियम साइज का होगा वो एम से डेजिग्नेट किया है। ओके, तो इस तरह से होता है। अब देखो यहाँ पे जो अटैक है दैट इज फ्रॉम मीडियम साइज ग्रुप। ओके, वी आर डूइंग द अटैक फ्रॉम द मीडियम साइज ग्रुप, एंड देन व्हाट विल, वेयर विल बी द न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल कहाँ होगा? न्यूक्लियोफाइल विल बी in eclipsing position with the, right, with a medium sized group. Okay, as you can see, like when we have a carbon atom like this, we have a nucleophile here and we have a N here, right? And this is S, this is O. Okay, Sawhorse projection, right? And this is L. So when we see from this side, okay, we have a Newman projection like this. So you, as you can see, the nucleophile, incoming nucleophile and the medium size group are on the same side. Okay, and this is O and S are on the same side. So this is the second, okay, this is the second pathway in which the nucleophile can attack, right? So we have a eclipse conformation again, right? And then what happens? We give it a rotation. Okay, we give it a rotation. This is in clockwise direction, I guess. Okay, clockwise by 60 degrees, and then we have a staggered conformation again, right? Now अब आप ही लोग बताओ कि न्यूक्लियोफाइल किस डायरेक्शन से अटैक करे तो उसको कम जो रिपल्शन है वो फील करना होगा, राइट? Okay, a bond has electron density, right? So we have certain groups, some are large, some are small. A large ग्रुप होगा तो क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा, स्टेरिकली पॉसिबल नहीं होगा। ओके, देयर वोंट बी अ लॉट ऑफ फ्री स्पेस। सो लार्ज इज आउट ऑफ क्वेश्चन। लार्ज ग्रुप जो है दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, कुछ उसकी तरफ से तो जाएगा ही नहीं न्यूक्लियोफाइल। तो क्रैम रूल इस मामले में बहुत क्लियर है, जो लार्ज ग्रुप है दैट विल बी इन स्टैगर्ड पोजीशन विद द oxygen, right? Oxygen of the carbonyl. So this is 180 degrees, as you can see, right? 180 degrees. ओके, सो उसका तो अब मेन हमारा क्या है कि मीडियम साइज से अटैक करेगा कि स्मॉल साइड से करेगा। तो उसके लिए हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया। एक बार हमने स्मॉल से कराया अटैक, एक बार मीडियम से कराया, तो हमें जो दो प्रोडक्ट्स मिले वो हमें दिख रहे हैं सामने। लेकिन ग्रैंड रूल क्या कहता है? जो अटैक होगा that will be from the small side. So this is a stereoselective reaction, right? One will be the major product and one will be the minor product. So मोस्ट फेवरेबल पोजीशन क्या होगी? मीडियम थोड़ा बड़ा ग्रुप है, स्मॉल छोटा है, तो किस साइड से ज्यादा उसे फैसिलिटेट होगा अटैक करना न्यूक्लियोफाइल को? ऑब्वियसली स्मॉल साइज। सो तो हमने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ा, ओके, सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट? नाउ वी लुक एट अ रिएक्शन and you will tell me what is the major product, right? So this is MEMGBr, okay, methyl magnesium bromide. What is this? This is Grignard's reagent. Grignard's reagent. So we need to attack. What is the nucleophile here? What will be the nucleophile? Can you tell me? Yes, Me minus, right? So this is the nucleophile. Okay, so where will be the attack? It can be from this side or it can be from this side. So when we have an attack, and as you can see the Newman projection, we already have three groups. Okay, the first step is to convert the formula into small, medium, and large group, and then put it in in Newman projection, and then view the molecule. So this has already been done. So we have one carbon in here, right? This is a aldehyde, and then we have another carbon atom. We have PH, we have H, and then one is Me. So this is converted into Newman projection. What happens? What we'll keep? We'll keep the carbonyl in the 180 degree with the large group. So this is the large group. Okay, PH is the large group, and H is the smaller group, and methyl is the medium group. So we have a configuration like this. Okay, whatever diagram is there on the screen. Okay, I hope that's understood. So the methyl attack will either occur from the small side से होगा या तो medium side से होगा। अब क्रैम्स रूल क्या कहता है कि that will be from the small side। अब आप ये बताओ कि इन दोनों में से small side में से कौन सा अटैक हो रहा है, राइट? अब इसमें दोनों जो प्रोडक्ट है ना, ये दोनों,
इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे OH जो है वो इस साइड है लेफ्ट में, यहाँ पे OH राइट है, तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर रिएक्शन की है, ठीक है, जब यहाँ से हम करेंगे तो क्या होगा, OH माइनस कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा शायद, right? This it will go towards this side and we have a Ne here. Okay, and when we do the like anti-clockwise movement of 60 degree, what we'll have this. Okay, the first one. So this is from the small side, this is the erythrio product and this is the major product and this one is the minor product. So when you do the whole thing, you'll have two products. So this is the question for you. Okay, वो लिख के पिक अगर पोस्ट कर सकते हो तो करो या फिर एक्सप्लेन कर सकते हो तो करो कि कैसे हुआ, राइट? अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। बाकी यही है क्रैम्स रूल। और इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि जब आर ग्रुप है, आर मतलब जो आर ग्रुप क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो सब्स्टिट्यूटिंग न्यूक्लियोफाइल है, राइट, वो CH3 है या CH2 है। देखो जैसे जैसे इसका साइज बढ़ रहा है न्यूक्लियोफाइल का, तो ऑप्टिकल यील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट? जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है आर का, वैसे वैसे जो है ऑप्टिकल यील्ड जो है वो बढ़ रही है। ओके, नाउ when we have a polar group, okay, जिस कार्बन, जो अगर कार्बन एटम में स्मॉल मीडियम और लार्ज ग्रुप अटैच्ड हैं और उससे एक पोलर ग्रुप अटैच्ड है, राइट, OH ग्रुप है एक अटैच हो रहा है, तो क्या होगा? समझ सकते हो आप क्या होगा कि तब क्रैम्सन कैसे फॉलो होगा? क्योंकि पोलर ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, पोलर है तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा। किस तरह से वो इंटरैक्ट करेगा ये आपको पता है? Okay, this rule can be modified when one of the group of the chiral carbon is polar. Right, this can be slightly modified, not the exact trajectory of path that it will follow, but it can be slightly modified. For example, we have a OH group or there is an alkoxy group, say CH3O. So what will happen? It has a high coordinating ability. So according to the modified rule, the polar group is oriented so as to eclipse the carbonyl, right? So this is the polar group. Okay, it eclipses the carbonyl. Okay, in the previous section we discussed that the large group should be put eclipsing position to the carbonyl, but when there is a polar group present, we put the polar group in the ecliptic position, right? So this is the eclipsing position, and then what happens is the reagent, Grignard's reagent or organolithium, then bridges among the polar and the carbonyl group. So this is the Grignard's reagent and it bridges between the carbonyl and the OH group, right? And then the attack occurs from the small side, right? Then the attack occurs from the small side. How can we say that? Because see, here the S is on the wedge, okay, and here the attacking R2 is on the wedge 2. So I hope this clarifies Cram's load. Thank you for watching.